Dear children, yesterday I was taught you history, the making of a global world, lesson 2. English chapter about to 13th century. I taught about to 13th century and preacher strugglers. Now look at the page number 72, ट्रेड। जैसा आपको बताया था, ग्लोबल वर्ल्ड का मतलब था विश्व को एक अर्थव्यवस्था से संचालित करना। कहने का मतलब है विश्व के समस्त देशों को एक इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था जोड़ना, अर्थात उनका व्यापारीकरण, पूरे विश्व को, हर एक देश को एक दूसरे के साथ व्यापार के साथ जोड़ देना, अनुबंध कर लेना, या अनुबंध करने की प्रक्रिया पूरे विश्व के देशों के साथ अनुबंध करने की प्रक्रिया ही एक वैश्वीकरण कहलाती है, अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। तो अब ट्रेड ग्लोबलाइजेशन का एक भाग है, उसी को देखें और समझें। अंडरस्टैंड न्यू ट्रेड। In the 16th century, the countries came closer to one another after European sailors had found a sea route to Asia and America. In the 16th century, अर्थात 16वीं शताब्दी में, the countries came closer, एक दूसरे के क्लोज आए, अर्थात एक दूसरे से जुड़े। कैसे? यूरोपियन सेलर, जब यूरोपीय नाविक एक दूसरे देशों में भ्रमण किया, उनके माध्यम से। फॉर सेंचुरीज बिफोर द इंडियन ओशियन हैड बीन नोन एन energetic trade with the goods, people, knowledge, customs. The Indian subcontinent was central to the trade. However, the entry of Europeans helped in the expansion of this trade towards Europe. Now, America's rich lands from the 16th century America's wastelands, abundant crops and minerals, transparent trade and life everywhere. Second, precious metal, silver found in the mines of Peru, Mexico, enhanced Europe's wealth and financed trade with Asia. Third, in the 17th century, Europe legends separate about E.I. Dorado, the fabled city of gold in South America. Spanish and Portuguese in America were the first European to conquer America in mid-16th century. स्पेनिश और पुर्तगाली थे, ये फर्स्ट यूरोपियन जो थे जो अमेरिका में अपने पैर रखते थे, अर्थात द कॉन्क्वेस्ट वाज नॉट ओनली देयर सुपीरियर फायर पावर और मिलिट्री पावर, इट वाज also of the germ of disease like smallpox which they took with them. America's original inhabitants had no immunity against the disease. Smallpox proved to be a deadly killer and decimated whole communities, paving the way for colonization. The role of this disease is evident from the letter of the first governor of the Massachusetts Bay Colony in New England, John Winthrop
written in May 1634, he wrote that smallpox single God's blessing for the colonist. Pathetic condition in Europe. By the advent of the 19th century, poverty, hunger, overcrowded cities, disease, religious conflicts, and ill treatment of religious dissenters were common in Europe. Hence, thousands of people of Europe moved to America. By the 18th century, slaves captured in Africa worked in plantation of cotton and sugar of European markets. Now trade till the 18th century. Till the 18th century, China was among the world's richest country. China was forced to restrict its overseas contact and retreat into isolation. Therefore, America gradually moved the center of the world trade westwards. Later, Europe emerged as center of trade world trade. Changing in the 19th century, the changing in the political, social, economic, culture and technological factor transferred the world in 19th century. The economists attributed these three types of movement or force within the international economic agenda. First, flow of trade, cloth or wheat. Second, flow of labor due to migration in search of job. Flow of capital for investment over long distance. All the above mentioned three flows were closely interwoven. They affected people's lives more deeply now than ever before. Now a world economic takes shape. The changing pattern of food production and consumption gives us a full insight into the changing world economy. Position in Britain. In Britain, food self-sufficiency means lower living standard and social control. Corn law. In view of pressure led by landowners, the government restricted the import of corn. These laws were commonly known as corn law. After the introduction of the corn law, food price became exorbitant. The industrialists and the people living in towns were too unhappy with high good price. They forced the British government to abolish the corn law. कहने का मतलब है कि अमेरिका से ब्रिटेन वाले कॉर्न मक्का मंगाते थे। क्यों मंगाने का कारण था, प्राइस लेवल जो थे बहुत एबव हो रहे थे, अर्थात महंगाई बढ़ रही थी, जिसके कारण लोग कुछ भूखों भी मर रहे थे, लोगों को खाने को भोजन नहीं मिल रहा था, जिसके कारण वहाँ की सरकार ने अमेरिका से कॉर्न मंगाया और उस कॉर्न का विरोध करने के लिए अनेक प्रकार से लोगों को उत्साहित किया गया। कहने का मतलब है जो किसान थे उनकी वस्तुएं बिक नहीं पा रही थी और दूसरे देश से अनाज मंगा लिया गया, जिसके कारण वहाँ के किसानों ने विरोध किया। उसके पक्ष में बनाया गया कानून ऑबलाइज द कॉर्न लॉ कहलाया। तो दे फोर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू ऑबलाइज, ब्रिटिश सरकार ने ऑबलाइज उन्मूलन के लिए कॉर्न लॉ बनाया, मक्का कानून। Obligation of the corn law. After the obligation of corn law, food could be imported into the Britain at much cheaper rate
than it was before. मतलब कानून समाप्त होने के बाद कम कीमत का अनाज मंगाया गया, बट इट हैड एन अदर्स एस्पेक्ट टू. ब्रिटिश एग्रीकल्चर was unable to compete with the imports. Vast area of land were left uncultivated. Thus, thousands of people lost their livelihood. They came to the cities in search of work and migrated overseas. Now, effect of abolition of corn law. Consumption increased. कल्टीवेशन अर्थात कृषि का विकास हुआ, रेलवे रोड का विकास हुआ, मोर होम एंड सेटलमेंट, कैपिटल फ्लो, इमाइग्रेशन फ्रॉम यूरोप, माइग्रेशन, डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी, लो पेड वर्कर और ड्रामेटिक चेंज रॉ मटेरियल, इन सब के बारे में कल पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीक. थैंक्स.